Hello, this is Subodh sir, Director Subodh Law Classes, Ranchi. So the saga of success in Subodh Law Classes, it continues. Earlier we had this Sripriya Agrawal securing 29th rank in Rajasthan Judicial Service Examination, and now we have Sripriya, who is sitting right in front of me. She has got 3rd rank. You can imagine 3rd rank in Jharkhand Judicial Service Examination. Actually बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल इस कोचिंग से झारखंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन कोचिंग से जो बेस्ट रैंक आया है दैट इज 3rd रैंक, एंड वी हैव Sripriya with us. She has got 3rd rank in Jharkhand Judicial Service Examination. Actually she just prepared for 1 year, and in her very first attempt, in her very first exam which she gave, in the very first attempt she has cleared Jharkhand Judicial Service Examination and she has got wonderful 3rd rank. Now so बहुत बहुत बधाई इस सफलता पर। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं कि आगे आप जुडिशियल क्षेत्र में बहुत विशिष्ट योगदान देंगी और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आप न्याय करेंगे, और इस प्रकार जुडिशियल सर्विसेज की जो गरिमा है उसको बनाए रखने में आप अपना अहम भूमिका निभाएंगी, ऐसा हम आशा करते हैं, जिससे आप पूरे समाज को गौरवान्वित कर सकें। सो many congratulations on this grand success. You have got wonderful rank, 3rd rank. So ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और हम आशा करते हैं कि आगे आप सर्विस में भी विशेष योगदान देती रहेंगी। नाउ आपके दिमाग में कब आया कि आपको जुडिशियल सर्विस की तैयारी करना चाहिए, जुडिशियल के क्षेत्र में जाना चाहिए? जी तो जब मैंने क्लैट दिया था लॉ परस्यू करने के लिए, तो मैंने सर से ही गाइडेंस लिया था। मैंने 12th बोर्ड्स देने के अगले दिन ही मैं सर के पास आ गई थी 1 महीने का क्रैश कोर्स करने के लिए, और वो क्रैश कोर्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि मैंने 1 महीने में ही मेरा रैंक क्लैट में 1400 आया था, जिससे मुझे नेशनल लॉ स्कूल रांची मिल गया। और क्योंकि मैं रांची की ही रहने वाली हूँ तो मेरे लिए इससे बेहतर कुछ और था ही नहीं। फिर 5 साल मैंने रांची में पढ़ाई की, और फिर ग्रेजुएट होने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं कॉर्पोरेट फर्म में जॉब करूं या फिर मैं जुडिशियल सर्विस प्रेफर करूं, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस मानी जाती है लॉ के क्षेत्र में। तो मुझे पता था कि सर भी इस क्षेत्र में गाइडेंस दे रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि एक बार सर से गाइडेंस लेने चलते हैं कि इस सर्विस को फॉलो करना है नहीं करना है। तो हम सर के पास आए थे। सर ने मुझे बोला कि तुम 1 साल प्रिपेयर करो हमारे यहाँ से, और फिर तुम्हें अगर कॉर्पोरेट जॉब करना हो तो करना और एग्ज़ाम वगैरह देते रहना, लेकिन 1 साल की प्रिपरेशन ज़रूरी है यहाँ के लिए। और तभी मैंने सर की बात मानी और मैं यहाँ पढ़ने आ गई, और विदिन 1 ईयर ही मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और साथ साथ मैंने LL.M भी कर लिया। तो ये सारी गाइडेंस मुझे सर से ही मिली है यहाँ पे। That's excellent. So we'll discuss many questions, but in the very beginning I would like you to answer on this question. Basically those people who prepare for judicial examination, they think that syllabus is very fast, and it's not possible to cover that within 4 months, 5 months, 6 months, whatever it may be, or thinking that the syllabus is very fast, they actually sometimes lose confidence and they give up preparing for judicial examination, and they think that exam के दिन इतना सारा पेपर CPC, CRPC, evidence, transfer of property act, ये सारा पेपर्स को just on the eve of examination रिवाइज करके वो सारे क्वेश्चंस को उस दिन जवाब दे देना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दिस काइंड ऑफ फोबिया, दिस काइंड ऑफ फियर इज देयर अमॉन्गस्ट द स्टूडेंट्स। आपको ये फियर या फोबिया था या नहीं था, या इतना फास्ट सिलेबस को आप कैसे इजीली टैकल करके इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू एक्चुअली क्रैक दिस एग्जाम? प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस इशू। जी सर, फियर तो होता ही है, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। करीब 15 से 16 लॉ पेपर्स आपको कवर करने होते हैं, साथ में GK GS वगैरह सब कवर करना होता है। और आपने जिस तरीके से लॉ स्कूल में पढ़ाई करी है वो और यहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट होता है। ऑल्दो सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन अप्रोच जो है वो डिफरेंट होता है दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि लॉ स्कूल में आपको लॉयर बनना सिखाया जाता है, सेक्शंस को इंटरप्रिटेशन सिखाया जाता है, दलील देना सिखाई जाती है, लेकिन जज बनने के लिए आपको एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए जो आप लॉ स्कूल में नहीं सीख सकते।
तो मेरे मन में भी यही ख्याल था कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर होगा, 1 साल का ही टाइम मुझे देना था खुद को। और फिर मैं सर के पास आई तो सर ने बोला कि स्पेसिफिक अप्रोच से ये क्लियर हो सकता है। सो जब हमने तैयारी शुरू की तो what sir used to do was that we did not used to read all the bare acts or all the sections, all the provisions. Firstly, sir had guided us very well with specific provisions that okay, these are the sections which are most important, and there were few sections from the bare acts, few chapters from the bare acts which we did not even touch those provisions. We did not even read those provisions. And when I was giving the exams to my like, I was really surprised that whatever sir has taught and whatever sir had skipped, all the things matched. None of the sections from the portions we had skipped, no questions came from those portions. So this way we had sir had lessened the syllabus for us, and this way we could revise more of the syllabus rather than reading CPC for 3 to 4 months. We could complete it in 1 month itself, because we were not reading whole CPC, which many students fear, because CPC, CRPC are very vast bare acts and very vast commentaries, and if you go on to read each and everything, then it will take around 2 years for you to complete it. But with sir's guidance, I could complete it within 3 months. Both the procedural laws we were able to put it on our fingertips for 3 months. So although the syllabus was vast, but with good guidance and specific approach, we were able to complete the syllabus in around, I would say, 7 to 8 months. The whole bare acts were on my tips. We were also following standard commentaries, notes given by sir, and to my surprise, whatever I could not cover in 5 years of law school, I had covered in 8 months of coaching over here, and I was very positive, because even if I could not have cracked judicial services, I would have made a very good lawyer with all this study that I did here in 8 months. So for me it was a win-win situation. Even if I could not have cracked it, it would have been helpful for me with sir's guidance. That's excellent. So the summary of this answer is that syllabus vast है, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ाई करके सफलता पाई जा सकती है। जी, जी। और ऐसा टॉपिक्स जो बार बार आता है उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा टॉपिक जो कभी भी टच नहीं हुआ है, जनरली उसको इग्नोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, इफ़ यू टेक CPC राइट फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 20 ऑफ CPC फॉर एग्जांपल, तो इसमें इफ़ यू सी द इम्पोर्टेंट सेक्शंस, मे बी सेक्शन 9, section 10, section 11, then sometimes you get questions on foreign judgment and all, then place of suing and things like that. So we have to be very selective as far as important topics are concerned, and that must be mastered thoroughly. उस प्रकार वह टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेमोराइज तो करना है, लेकिन मेमोराइज के साथ साथ थिंग्स को बहुत अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना है कि वह रिटेन हो सके। नाउ इफ समबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस जुडिकेटा, तो सेक्शन 11 को तो एक्सप्लेन करना है, साथ में जो 8 एक्सप्लेनेशंस है उसको भी याद तो करना है, लेकिन याद के साथ उसको समझ भी लेना है कि अगर हम कुछ भूल भी गए तो अगर याद रहेगा तो उस चीज़ को हम लोग ठीक से लिख सकते हैं। सो इफ़ यू टॉक ऑफ जुडिशियल एग्जाम, ठीक है, मेमोराइज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चीज़ को अच्छे ढंग से समझ लेना है कि वह स्टोरी के रूप में याद हो जाए। सो वी कम टू द कंक्लूजन, सिलेबस वास्ट है, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक्स को चूज करते हैं, उसको थरो नोट्स बनाते हैं, अपनी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को इजी ढंग से याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पीटी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जी, तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो वी डिसाइडेड दैट सिंस वी नो दैट इन पीटी यू हैव टू मास्टर द बेयर एक्ट्स, सो सर हैड मेड अस रिवाइज द बेयर एक्ट्स फॉर, आई वुड से 20 to 30 times. I have revised the bare acts, all the major acts, minor acts. We used to give so much time with sir, and sir was also very helpful in this. Sir used to give us like
in the morning sir would go for CPC, CRPC and major subjects. In the evening he used to teach us minor subjects, and whatever else, whatever other subjects we wanted to study, sir was also very helpful for that also. He used to teach us all those acts also. So for PT, we have to master the bare acts. There is no other solution. And in bare act also, there are few provisions, like sir said, res judicata and else. Those provisions we used to study from the commentary as well. So apart from the bare acts, we used to follow the standard commentaries like Takwani, Kelkar, and all the standard books that we had for the major and minor subjects, so that the concept is also clear. Because there is misconception among students that you have to आपको रटना है पूरा बेयर एक्ट. हम कैसे रटेंगे, हम CPC कैसे रटेंगे, CRPC कैसे रटेंगे. बट रटना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ आप एग्ज़ाम में जाके भूल भी सकते हैं. बट अगर आप समझ के जाओगे कि हाँ रेस जुडिकेटा क्या है, रेस सब जुडिस क्या है, उसका काम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब आपको बेयर एक्ट से नहीं मिलता है. वो आप कमेंट्रीज अगर थॉरोली पढ़ेंगे, सेक्शन 11 पे जजमेंट्स पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तभी आपको जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो ये दोनों अप्रोच फॉलो करना चाहिए. कुछ सेक्शंस जो आपको समझ ना आए वो आप कमेंट्रीज से पढ़ सकते हैं, और बाकी आपको बेयर एक्ट टिप्स पे करना होगा कि सेक्शन नंबर्स याद रखने होंगे, और सेक्शन में क्या बता रहा है वो याद रखना होगा. फ्यू लैंडमार्क केसेस याद रखने होंगे, एंड देन you will be prepared for prelims exam. Okay, that's excellent. So summarize, PT के लिए बेयर एक्ट को थॉरली पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है उसको भी थॉरली पढ़िए, क्योंकि PT एग्जाम में आपको जजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. बेयर एक्ट को PT के लिए बार बार रिवाइज कीजिए, एंड दैट विल सफाइस. नाउ सो 2 things, mug up bare act as far as PT is concerned, and also side by side see case laws. और जब बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 to 10 CRPC पढ़ लिए, तो सेक्शन 1 to 10 पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल एक्चुअली क्लियर द कंसेप्ट्स. सो यू हैव सो मेनी बुक्स इन द मार्केट which the questions are there based on each and every section. So practice each and every section, and after practicing each and every section, say you have finished CPC, then after that all the questions on CPC which have come in different PT exams, now you can buy those books in the market. You have collection of question papers of last many years. You practice those questions on CPC, and in this way your concept on CPC will become clear. I guess you practice lots of questions, right? True sir. Okay. Now जब आप रिटन एग्जाम दे रही थी, मेंस की एग्जाम, तो उसमें जो आंसर्स लिख रही थी उसमें केस लॉ कितनी थी, ये आप हमारे दर्शक को बताइए. जी सर. क्योंकि मैंने केस लॉ ज़्यादा नहीं रटे थे. आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट rather than like showering my answers with case laws. I had very few case laws on my tips regarding that subject, and say if a question has asked me specifically that mention case law or refer case law, I would mention one case in that answer. And if the question has not mentioned that you have to refer cases or anything like that, I did not mention case laws at all in that question. I just cited few examples in it, and that was it. I did not refer more case laws. I was more specific towards my answer. Whatever they had asked, I would write it in a very short few lines, and that would suffice. That was suffice for that. Okay, answer. That's excellent. So for mains, the strategy which adopted is that ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर को स्ट्रिक्टली क्वेश्चन के अनुसार लिखी, और जहाँ जहाँ केस लॉ की जरूरत थी वहाँ केस लॉ दी, लेकिन इनके आंसर्स में बहुत केस लॉज नहीं था, राइट? जी सर. बट शी रोट थिंग्स जस्ट according to the question. She never wrote here and there, and she never wanted to fill the pages, but she always believed in what is known as substance. So she always concentrated on the pattern of question paper, and she wrote as per the question paper. She gave case laws, but not many case laws. But of course, you should always write as per the question which is given in the question paper, and if you have some important judgments, you can write that. That will have impact on the answer. Now, what was your experience with the interview board? What questions were put up? What kind of answers you gave? And what was your overall experience with interview board?
Sure, sir. Yeah. The interview board comprised of High Court judges and one member was chairman of the Jharkhand Public Service Commission. Okay. So my interview was not a very lengthy one. It was just for around 15 to 18 minutes interview. That's good. There they asked me about my introduction. So once you give your introduction, you need to be specific about your introduction. Don't go mentioning about your father's name, father's job profile, or anything about your parents, brother, sister. Just stick to your introduction, that where you have studied from, what is your name, and what are you studying right now. That's it. Just a 3 to 4 line introduction should be there. Thereafter the chairman of JPSC started asking me questions with regard to constitution, evidence, CPC, and then the High Court judges asked me on practical questions. All the questions were practical, that if this happens, what section will apply, and then how will you deal with it, and if this is found, how are you going to deal with it. So the questions were from constitution, IPC, CRPC, transfer of property Act, Evidence Act, whatever was in our syllabus. The questions came from all of these. Apart from that, the board was very friendly, and they also engaged me in conversation regarding my university life at university, what I used to do in my free time at university. So it was a great experience overall over there. Okay, yes. That's excellent. To summarize, इंटरव्यू में इनसे सारे टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल थे, and she gave practical answers. To summarize, she wants to say that one has to be very natural in interview. True. One has to be very natural. So questions were there from constitution. चूँकि आप written exam पास कर चुके हैं, तो you have already established कि आपको कुछ चीज़ मालूम है. तो इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए जहाँ तक संभव हो, you be natural and you give a straightforward answer to the board. And as she pointed out, जो क्वेश्चंस का जवाब इनको नहीं आता था, ये स्ट्रेट वे इन अ वेरी हम्बल मैनर शी सेड दैट सॉरी सर, आई डोंट नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट बाय एंड लार्ज शी वाज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था विच एक्चुअली थ्रू अ सरप्राइज ऑन हर. ये जो पढ़ी थी CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी सबसे क्वेश्चंस पूछा गया था, एंड यू नो शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली. सो जितना भी मिसकंसेप्शन है कि सिलेबस वास्ट है, ये जुडिशियल एग्ज़ाम बहुत टफ है, ये इंट्रेंस नहीं निकल सकता है, ये सारे मिसकंसेप्शन को दूर कीजिए, राइट दिशा में कड़ा परिश्रम कीजिए और सफलता अवश्य ही आपको मिलेगी. सी इज अ बर्निंग एग्जाम्पल विच इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट right in the very first attempt itself, she has not only completed Jharkhand Judicial Service Examination, but she has got 3rd rank, the result of which was declared on 11th February 2020. And you know, she has achieved this simply by working hard for 1 year. So जितने भी विद्यार्थी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं हार्डवर्क कीजिए, राइट स्ट्रैटेजी एडॉप्ट कीजिए, और जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, केस लॉज का भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और एक लिस्ट बनाइए, उसको डेली रिवाइज कीजिए. रिवाइज करने से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, और इस प्रकार 100% यू विल सक्सीड इन द एग्जाम. ऑफ दिस देयर इज नो डाउट एट ऑल. शी इज अ बर्निंग एग्जाम्पल राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई होप इनका जो इंटरव्यू है, यू विल गेट enriched by her experience. Actually, whatever she spoke, those things will guide you in your preparation, and we hope that this interview will go in long way in encouraging, boosting confidence of aspirants who are preparing for judicial service examination. So Sripriya, thank you so much for giving this interview for future aspirants, and I hope whoever will approach to you, you will keep on guiding them in the right direction, and by getting your experience, they will get enriched and they will proceed in the right direction to crack this judicial examination, which is becoming very popular in today's time. Almost every year we have judicial exams of some states, and I think those students who are preparing seriously for 1 year, एक ईयर के प्रिपरेशन के बाद उनका कहीं नहीं होगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है. राइट स्ट्रैटेजी, राइट पर्सपेक्टिव, राइट दिशा में उचित तैयारी अवश्य ही आपको सफलता दिलाएगी. थैंक यू सो मच.